हेलो फ्रेंड्स, आपका निरंकारी वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लिंक में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर पे चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो लिंक में हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल पॉइंट पे चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। द्विध्रुव के कारण निश्चित दूरी पे हम विभव की गणना करेंगे। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ electric dipole consisting of two point charges minus q and plus q, separated by a distance 2a, let P be a point on the axis of the dipole, at a distance r, from the center O, The figure minus q plus q and this is the origin. इसकी लेंथ जो है कितना है डाइपोल की 2a है और इसके सेंटर से r दूरी पे एक पॉइंट P है। पॉइंट P पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण रिजल्टेंट पोटेंशियल की हम कैलकुलेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एट पॉइंट P, electric potential at point P due to the dipole is V equal V1 plus V2, that is minus 1 upon 4 pi epsilon naught minus q upon पॉइंट A, B एंड P। क्या हो जाएगा AP प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP, that is minus 1 upon 4 pi epsilon naught plus Q upon R plus A।
ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए हो जाएगी और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए हो जाएगी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R-A। तो हम क्या करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल देंगे। तो ये हो गया -1/R प्लस A प्लस 1/R माइनस A। और Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस A minus 1/R plus A, it becomes Q/4 pi epsilon naught R square minus A square, and it becomes R plus A minus R minus A, that is Q/4 pi epsilon naught, and it becomes R plus A minus R plus A upon R square minus A square, that is Q/4 pi epsilon naught R से R गया 2A upon R square minus A स्क्वायर, और V इक्वल Q इंटू 2A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, and 2Q A equal P, so V equal 1/4 pi epsilon naught P upon R square minus A square. For a short dipole, A square is very less than R square, or A absolutely 0, then V equal 1/4 pi epsilon naught P upon R square. This is the resultant electrical potential due to an electric dipole in axial position from at point P. Electric potential at an equatorial point.
electric potential at an equatorial point of a dipole. Of a dipole. Consider an electric dipole. Consider an electric dipole. Dipole consisting of charges minus q. Consisting of charges minus q and plus q, separated by distance 2a. Separated by distance 2a. Let P be a point. Let P be a point on the perpendicular bisector. On the perpendicular bisector of the dipole. Of the dipole at the distance of small r from its center O. Electric potential at point P. Electric potential at point P due to dipole H. Due to dipole is V equal V1 plus V2, that is minus 1 upon 4 pi epsilon naught q upon AP plus 1 upon 4 pi epsilon naught q upon BP. And figure form, this is minus q plus q, distance between 2a, and this is origin, this is point A, this is point B, this is point P, distant from here ये एंगल क्या है 90, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा A. AP इक्वल BP, दैट इज अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, देन V इक्वल minus 1 upon 4 pi epsilon naught q upon under root A square plus R square plus 1 upon 4 pi epsilon naught q upon under root A square plus R square, that is equal to 0. Third is electric potential at any general point. Electric potential at any general point due to a dipole. Due to a dipole. Consider an electric dipole. Consider an electric dipole
consisting of 2-point charges, consisting of 2-point charges, दो एक द्विध्रुव जो दो चार्जेज से बना हुआ है उसके चार्ज हैं -q एंड +q, और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 2 है, एंड separated by distance 2a. We wish to determine the potential. We wish to determine the potential at a point P, at a point P. Distance r from the center O, from the center O. The direction OP making an angle theta. The direction OP making an angle theta with a dipole moment P. Dipole moment P. Let AP equal R1 in figurized form, -q +q, which is the center. Distance between two charges equal to TA from center at a distance or at any point P, making angle theta. Then resultant electrical potential at point P equal let AP equal R1 A B. Let AP equal R1 and BP equal R2. Net potential at point P. Net potential at point P due to dipole edge. Due to dipole edge, V equal V1 plus V2, that is 1/4πε0 minus Q upon R1 plus 1/4πε0 plus Q upon R2. Then 1/4πε0 Q यहाँ से बाहर निकालना है, R2 minus 1/R1, that is 1/4πε0 R1 R2, and it becomes R2 minus R1. If the point P lies far away,
if the point P lies far away from the dipole, then R1 minus R2, equal to AB cos theta. AB cos theta and R1 R2 equal R का square, then V equal Q upon 4 pi epsilon naught 2a, और ये हो गया cos थीटा अपान R square, then V equal 1 upon 4 pi epsilon naught 2qa cos theta upon R square, then V equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta upon R square. Now we will calculate. So friends, in my next video link we will calculate electrical potential due to a system of charges. So wait for my next video link. Thanks.